रिकॉर्ड दिस सेशन। आज हम लोग 25वां लेक्चर लिटरेरी टर्म पे कवर करेंगे। पीडीएफ फाइल में शेयर कर रहा हूँ, अगर विजिबल होगा तो बताइए। हेमराज, सैयदा, रुबीना, शिवानी, आई थिंक इट्स विजिबल। यस सर। ठीक है, ओके। वी हैव सम वर्ड्स जिसमें सबसे पहला और इम्पोर्टेंट वर्ड है कोर्टली लव। इससे रिलेटेड जो है you will get that 2 or 3 questions have been asked in UGC, NET, TGT, PGT, and here you will find some important writers and their works. Here you find word की courtly love, जिसमें बताया गया कि a doctrine of love together with an elaborate code governing the relation between aristocratic lovers. Often you find कि जो courtly love है it occurs between aristocratic lovers. एक पॉइंट यही, एक क्वेश्चन यही बनता है कि कोर्टली लव हैपेंस या कोर्टली लव occurs between, it occurs between aristocratic lovers just as prince, princess, yeah, you may take another example, knights, fairies, especially in the middle ages such type of love happened, such type of love occurred, and such type of love has been addressed as courtly love or aristocratic lovers, which was widely represented in the lyric poem. और जितना भी कोर्टली लव है किस पोयम में आया हुआ है? लिरिक पोयम में आया हुआ है, not in the form of epic, not in the form of, you can say, other literary other forms of poetry, but in the form of lyric poems and chivalric romance. Chivalric is a French word you find here, and chivalric romance, the pronunciation will be chivalric, not chivalric, but chivalric romances of Western Europe during the Middle Ages. There are some important words. Courtly love occurs. Yeah, it occurred, it happened, it took place between aristocratic lovers. Number 1 point. Number 2 point. This love has been presented in lyric poems. Number 3, it took place in the Middle Ages. Number 4, it just shows chivalric romance. What is chivalric romance? A type of romance in which you find adventure, you find sensation, and you find love that happens between knights, fairies, warriors, landlords, landladies, ministers, courtiers, are the person who come in the category of aristocratic class or upper class. The next point which you have to keep in your mind, that is the development of the conventions of courtly love is usually attributed to the troubadours. This is another important word, troubadours. जो कोर्टली लव का डेवलपमेंट हुआ वो कहाँ पर हुआ है? पोएट्स ऑफ प्रोविंस इन साउदर्न फ्रांस. सबसे पहले जो कोर्टली लव आया वो साउदर्न फ्रांस है. दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट. तो हियर यू फाइंड कि जो ट्राउबेडर्स है वह क्या है? वह उस जगह को कहा जाता है जो पोएट्स ऑफ प्रोविंस है, स्पेशली साउदर्न फ्रांस. In the period from the late 11th century through the 12th century, और उसका टाइमिंग क्या था? 11th century से लेकर के 12th century तक ये चीजें थी. The courtly lover idealizes and idolizes his beloved. यहाँ से उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा कि जो भी कोर्टली लवर रहे हैं उन्होंने आइडियलाइज किया है और आइडोलाइज किया. दे आर द टू वर्ड्स. आइडियलाइजेस, उनको आदर्श, एक तरह से यू कैन से कि they have just presented their beloved as an ideal figure and also idolize. The word idolize, they have the sentiment to worship their beloved. That is the point. So these are the 2 words which you have to remember. Courtly lover idealizes and idolizes his beloved and subjects himself to her every whim. This love is often that of a bachelor knight. इसमें दिखाया गया कि एक बैचलर नाइट है, for another man's wife,
as in the stories of Tristan and Isolde. This is another important. Tristan and Isolde is an example of what? It's an example of कोर्टली लव. ये जो वर्क है ट्रिस्टन एंड आइजोल्ड, यह इसमें कोर्टली लव को प्रेजेंट किया गया है. दूसरा वर्क कौन सा है? लैंसिलाट एंड ग्वाइनीवीर. ये फ्रेंच के लैंग्वेज में आया हुआ है. ये सब उसका. तो ट्रिस्टन एंड आइजोल्ड, लैंसिलाट एंड ग्वाइनीवीर. It must be remembered that marriage among the upper classes in medieval Europe was usually not a relationship of love, but a kind of business contract. Yes, should be business contract for economic and political purposes. So I would like to tell you that in the first page, in the first sheet, you came to know about courtly love, and it happened where it happened in aristocratic class in the Middle Ages, and you find here that this type of love has been presented in lyric poems. You also see chivalric romance. You find that these things happened especially in Western Europe. And another important point, what is that? In a particular area of France, that was the southern France, 11th and 12th centuries. And next, you find the basic characteristics of such type of love, in which the lover, especially the lover, courtly lover, idealizes and idolizes his beloved and subject himself to her every whim. It means that courtly lover is begging, courtly lover is requesting, courtly lover is imploring to his beloved, and beloved has been presented as an ideal figure. Beloved has been idealized and idolized, and you find here key superiority of the beloved to lover. Superiority of the beloved to lover. Another point I told you ki, in such type of love you find a bachelor knight uh, who is seeking the love of another man's wife, and such thing you find in the works Tristan and Isolde, Lancelot and Guinevere. All these things you see. Now sharing with you the next page. In the next page you find कि जो lover है उसमें क्या दिखाया जाता है कि agonies of body and spirit, especially the night always the lover always suffers pain, stain, trauma, separation, and spirit as he is put to the test by his imperious sweetheart. जो उसका sweet heart है वह क्या imperious है, but remains devoted to her, manifesting his honor by his friendly and his adherence to a rigorous code of behavior, both in knightly battles and in the complex ceremonies of courtly speech and conduct. So here already I told you कि lover present himself, lover implores, lover requests, lover just begs to his beloved. He wants to get her love. He wants to get her beautiful company. He wants to be the part of her life. But this is the beloved that has some superiority, and that has some, you can say, a type of situation in which you find always ki lover only seeks the love of the beloved, and he presents himself not as an angel, but the beloved has been presented as an angelic figure. So you find ki imperious sweetheart, but remains devoted to manifesting his honor by his fidelity and his adherence to a rigorous code of behavior, both in knightly battle and in the complex ceremonies of courtly speech and conduct. The origins of courtly love have been traced a number of sources. Roman poet. This question has been asked in UGC net. Roman poet Ovid's mock serious book The Remedies of Love. This question has been asked, who has written The Remedies of Love? Roman poet Ovid has written. There was a Roman poet Ovid has written, and the name of the book is The Remedies of Love. So you have to learn the name of the book by heart. And other is Sir Gawain and the Green Knight. Sir Gawain and the Green Knight एक मिडिल एज पे आया हुआ था. Chaucer से Troilus and Cressida. This is another authentic piece of literature.
which has been asked, in which work of Chaucer you find the spirit of courtly love? We find the spirit of courtly love in Chaucer's Troilus and Cressida, Roman poet Ovid's The Remedies of Love, Sir Gawain and the Green Knight. These are the works which you have to learn. In the next passage, you find the issue of courtly love was revisited by Jacques Lacan. जो इशू है कोटली लव का इन रिसेंटली या इन पोस्ट मॉडर्न एज इन पोस्ट colonial era in modern age it was revisited, it was revived by Jacques Lacan. This is another important name which you have to keep in your mind. In modern age, if any critics revisited, if any critics talks about, if any critics revisited or talks about courtly love, that is Jacques Lacan, and more recently by Slavoj Zizek. This is the pronunciation. It is the name of another critic, Slavoj and Zizek. Both note that the woman in all fictions of courtly love seems to be the same person, or rather the same non-person, since she is no more than an abstract idea. They all believe that the woman or the lover or the beloved have been portrayed, have been depicted, have been presented as their characters, their manners, their attitude, their lifestyle. These things have been presented, they are only abstract ideal. They're only abstract ideal. On the ground of reality, we don't find such type of character. With this suggestion, Zizek argues that there is no sexual relation with the lady who serves as a representation of fact that human desire can never be fully gratified. I would like to tell you here, in this sheet, you have only to remember three or four names: Roman poet Ovid's The Remedies of Love, Sir Gawain and the Green Knight, Chaucer's Troilus and Cressida. The issue of courtly love was revisited by Jacques Lacan and Slavoj Zizek. These names, and already I told you ki what happens when you see a courtly lover, when you see a beloved. How do you find beloved is superior to courtly lover? Courtly lover only just you can say request uh, to beloved to get her beautiful company, and beloved has been presented as an angelic figure. Next point, if you remember, Roman de la Rose, Vocasios di Camiran. These are the works. Whether you talk about Roman de la Rose, Vocasios di Camiran, these are the beautiful examples in which you find the spirit of courtly love. Chaucer's Troilus and Cressida, this work you have to keep in your mind. And already I told you कि courtly love means love which happened between aristocratic lovers. And who is an aristocratic person? In the Middle Ages, persons were courtiers, ministers, landlords, landladies, princes, knights, kings, queens, और the people of upper class. जो अपर क्लास के लोग थे उनके बीच का जो लव था उसको दिखाया गया. So you came to know about what you came to know about courtly love. Now the next word which I have to discuss with you, which I have taken in this sheet, that is a critique. Critique means critic कौन होता है या critique एक शब्द है जो ग्रीक से आया हुआ है. और critique का क्या मतलब है? You find कि critique is often used to designate and especially robust and searching kind of criticism, especially robust and searching kind of criticism. It suggests a rational analysis of an intellectual position. What does it suggest? It suggests a rational analysis. It's a very significant point. It suggests a rational analysis of an intellectual position or a work of incorporating that position with a sharp eye for errors, confusions, or harmful implications. Remember that these three words. A critique is one who finds error. क्रिटिक वह है जो एरर को देखता है, जो कंफ्यूजन को देखता है,
जो ये देखता है कि हार्मफुल इम्प्लीमेंटेशन तो कुछ नहीं हो रहा है। द टर्म ग्लांसेस बैक टू द जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो क्रिटिक शब्द आया हुआ है इसके ऊपर जो है जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट ने एक किताब लिखा था। हु रोट थ्री क्रिटिक, जिन्होंने थ्री क्रिटिक्स लिखा था। प्योर रीजन, थ्री क्रिटिक्स मतलब प्योर रीजन, प्रैक्टिकल रीजन एंड जजमेंट। प्योर रीजन, प्रैक्टिकल रीजन एंड जजमेंट। इफ एनीवन आस्क यू कि क्रिटिक का ऊपर किसने बात किया हुआ है, जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट ने बात किया हुआ, जिन्होंने तीन तरह के क्रिटिक को लेकर के बात किया है। प्योर रीजन, प्रैक्टिकल रीजन एंड जजमेंट। उनकी जो एक किताब है इस पब्लिश इन 1781 टू 19, मतलब इसके बीच में उन्होंने इसको लिखा। द यूज ऑफ क्रिटिक इज एसोसिएटेड पार्टिकुलरली विद द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल थियरी ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल। ये क्वेश्चन यूजीसी टेस्ट पे आ चुका है। फ्रैंकफर्ट स्कूल क्या है? फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है अ ग्रुप ऑफ नियो मार्क्सिस्ट। फ्रैंकफर्ट स्कूल मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म से जुड़ा हुआ एक ग्रुप था, जिसमें जो है वाल्टर बेंजामिन आते हैं, हर्बर्ट मार्क्यूज आते हैं, थियोडोर अडार्नो आते हैं, मैक्स हारखेबर आते हैं, जर्जेन हैबरमास आते हैं। सो यू फाइंड हियर व्हाट यू फाइंड हियर क्रिटिक, एंड यू फाइंड हियर व्हाट यू फाइंड हियर कि इसका रिलेशन किससे रहा? जर्मन फिलोसफर इमैनुअल कांट से रहा है, जिन्होंने थ्री क्रिटिक्स को लेके बात की है। वो कौन सा? प्योर रीजन, प्रैक्टिकल रीजन एंड जजमेंट। एंड दिस बुक पब्लिश्ड इन 1781। The use of critique is associated particularly with the writings on critical social theory of Frankfurt School, a group of neo-Marxists that included Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Theodore Adorno, Max Horkheimer, and Jürgen Habermas. Now the fourth point is the criticism. Criticism, you don't find key criticism is ultimately what? Practicing or believing in an ideology, how to study a piece of literature, how to define it, how to classify it, how to analyze it, how to interpret it, how to evaluate it. If you find the suffix ism with any word, जैसे मॉडर्निज्म, दादाइज्म, सरियलिज्म, निहिलिज्म, फ्यूचरिज्म, इमेजिज्म, सिंबोलिज्म, you find what? You find suffix ism. If suffix ism is added with any word, it means practicing or believing in a particular ideology. एक नई विचारधारा वहां पे चल रही है। तो हिंदी में इज्म को वाद कहा जाता है, जैसे मॉडर्निज्म, आधुनिकवाद, रोमांटिसिज्म, छायावाद, ऑल दिस थिंग्स। तो क्रिटिसिज्म, आलोचनावाद। तो व्हेन आई टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म, इट मीन्स दैट की क्रिटिसिज्म आर मोर specifically literary criticism is the overall term. It refers to what? For studies concerned with defining. सबसे पहला चीज की क्रिटिसिज्म एक तरह का स्टडी होता है। उसपे किस तरह का स्टडी की जाती है? किसी चीज को डिफाइन किया जाएगा, क्लासीफाई उसको किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, इंटरप्रेट किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा। वर्क्स ऑफ लिटरेचर, any piece of literature, any works of literature, if you study any piece of literature with the intention that you have to define, you have to classify, you have to analyze, you have to interpret, you have to evaluate, it means that you are believing or practicing in an ideology that is known as criticism. तो ये चीजें होती है कि क्रिटिसिज्म एक आर्ट है, और उस आर्ट के तहत हम लिटरेचर के किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को हम स्टडी करते हैं, और स्टडी का जो हमारा तरीका होता है हम उसमें उसको डिफाइन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। दीज आर द वर्ड्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड टू अंडरस्टैंड। क्रिटिसिज्म डज नॉट मीन की आलोचना, नो, नॉट एट ऑल। ऐसा नहीं कि उसमें निगेटिव पॉइंट निकालना है। क्रिटिसिज्म के लिए और क्रिटिक के लिए एक कहा जाता है, इट हैज बीन सेड दैट कि अ क्रिटिक मस्ट बी न्यूट्रल, अ क्रिटिक मस्ट बी इम्पार्शियल,
and a critic should try to find out both the aspect, and both the aspect means what? Good and bad. If you find any you can say कि any positive response in the poem you have to present. If you find any negative response in the poem you have to tell, you have to address these things. तो criticism का मतलब ये होता है, criticism does not mean कि हिंदी में भी से आलोचना, तो नेगेटिविटी उसमें आती है, ऐसा नहीं कि उसका नेगेटिव पहलू निकालना, उसकी अच्छाई बुराई उसकी कमी उसकी सारी चीजों को न्यूट्रल होकर के इम्पार्शियल होकर के लाइक अ जज यू हैव टू प्रेजेंट। तो जब आप क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो उसमें थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म है। थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म जो थियरीज दी जाती है जिसकी लाइट पे किसी चीज को इंटरप्रेट किया जाता है या वी ट्राई टू जज, उसको थ्योरेटिकल क्रिटिसिज्म। इस्टेब्लिश थियरीज जैसे प्लेटो का थियरी, अरिस्टोटल का थियरी, लॉन्जाइनस का थियरी, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का थियरी, कॉलरिज का थियरी, वर्ड्सवर्थ का थियरी। वर्ड्सवर्थ का ना प्रीफेस पोएटिक डिक्शन है, कॉलरिज का इमेजिनेशन एंड फैंसी है, नेगेटिव कैपेबिलिटी ऑफ जॉन कीट्स है, एंड यू फाइंड अर्नोल्ड का एक थियरी है दैट इज अ आई एम जस्ट मिसिंग दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टच स्टोन मेथड। इलियट्स का इम्पर्सनल थियरी है। तो जो थियरीज होती है वे क्या होती है? इस्टेब्लिश्ड लिटरेरी नॉर्म्स होते हैं, रूल्स होते हैं। उन्हीं नॉर्म्स और उन्हीं रूल्स के लाइट में हम किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन करते हैं कि वो इसके आधार पे कितना सही है और कितना गलत है। तो थियोरेटिकल क्रिटिसिज्म it proposes an explicit theory of literature in the sense of general principles. It refers to what? General principles. PRINCIPLES. General principles together with a set of terms. उसमें एक बेसिक सिद्धांत होगा और उस सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी होगी, उसका distinctions and categories to be applied to identifying and analyze, और उसको हम अप्लाई करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और एनालाइज करने के लिए, क्या? वर्क ऑफ लिटरेचर। जैसे इफ यू हैव डन एमए, in MA you find a paper literary theory and criticism. In that paper you find critics from Plato to T.S. Eliot, traditional theorist, especially theory of mimesis, yeah, you can say concept of tragic hero, Aristotle's concept of tragedy. So these are the theories. थ्री यूनिटीज है, कैथारसिस है, परगेशन है, वो सब उसका टर्म है। इफ यू रिमेम्बर दैट, एक तो थियरी हो गया कि अरिस्टोटल जो है ड्रामा के बारे में, ट्रेजिडी के बारे में क्या कहते हैं, तो जो उन्होंने कहा है वो थियरी हो गया, लेकिन उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है। कौन सा? कोरस है, थ्री यूनिटीज है, पेरीपीटिया है, ह्यूब्रिस है, एनाग्नोरिसिस है, यू फाइंड दीज वर्ड्स। तो उसको उसकी लाइफ में ही इन द टेकिंग दीज वर्ड्स we identify, we analyze, we try to interpret this piece of literature. And there are the some standard norms also by which these works and their writers to be evaluated. The earliest and enduring important treatise of theoretical criticism was Aristotle's Poetics. एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सबसे पहला जो है लिटरेचर से रिलेटेड थियरी किस किताब में दिया गया था? अरिस्टोटल के पोएटिक्स पे, जो 4th सेंचुरी BC, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। पोएटिक्स किसने लिखा है? अरिस्टोटल ने लिखा है, जो किस सेंचुरी में आया था? 4th सेंचुरी BC में आया हुआ है। Among the most influential theoretical critics in the following centuries were Longinus। और ये सब चीजें ध्यान में रखना है, जो नाम है 21 कंट्री से बिलोंग करते हैं। लॉन्जाइनस एक बड़े थियरिस्ट थे जो ग्रीस से बिलोंग करते हैं। होरेस एक बड़े थियरिस्ट थे जो रोम से बिलोंग करते हैं। बॉयल्यू एंड सेंट ईव जो बिलोंग करते हैं फ्रांस से बिलोंग करते हैं। बाम गार्टन एंड गेटे जर्मनी से बिलोंग करते हैं। सैमुअल जॉनसन कहाँ से बिलोंग करते हैं? सैमुअल जॉनसन कॉलेज एंड मैथ्यू अर्नोल्ड इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। एंड पो एंड इमर्सन अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो यू हैव टू गो विद दीज थियरी। जितना भी नाम बताया गया है, लॉन्जाइनस इन ग्रीस, होरेस इन रोम, वायलू एंड सेंट व्यू इन फ्रांस, बामगार्टन इन गेटे इन जर्मनी, सैमुअल जॉनसन, ये सब चीजें। फिर उसके बाद जो है
ये आपको बताया गया कि जो लिटरेरी थियरीज है उससे जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। कई बार इसका डेट है, इस डेट के अलावा राइटर का नाम मैचिंग के लिए कई बार आया हुआ है। और ये टीजीटी के पर्सपेक्टिव से, पीजीटी के पर्सपेक्टिव से कुछ किताब है जो मैं अभी आपको अंडरलाइन करा दूंगा, उसे ध्यान में रखना। आइए, रिचर्ड्स का प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म सबके लिए इंपॉर्टेंट है, 1924 में आया है। केनेथ बर्ग का द फिलॉसफी ऑफ लिटरेरी फॉर्म्स, ये यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्यस क्रेज का क्रिटिक्स एंड क्रिटिसिज्म, यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है। इरिच इरिक और बीच बीबेसिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी इन वेस्टर्न लिटरेचर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। द अर्थराफ फ्राइज का एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म 1957, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स विद प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट सबके लिए। डॉक्टर जॉनसन का लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स टीजीटी पीजीटी के वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलेज का बायोग्राफिया लिटरेरिया टीजीटी पीजीटी 1870 में आया हुआ है, सबके इनके लिए इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू अर्नॉल्ड का एसेज इन क्रिटिसिज्म 1865, it's important for all the aspirants. I.A. Richards practical criticism 1930, and somewhere you also find the date 1929, तो कंफ्यूज ना होइएगा, कहीं पे आपको डेट 1929 भी मिलेगा, बट ये गो विद 1930। टीएस एलियट का सिलेक्टेड एसेज सबके लिए इंपॉर्टेंट है। टीएस एलियट का द सैक्रेड वुड 1920 सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लीद ब्रुक्स का द वेल रॉड आर्ट सबके लिए इंपॉर्टेंट है। विलियम हैजलिट्स अ जीनियस एंड कॉमन सेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ यू फाइंड की टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म। एक क्रिटिसिज्म है बिबेटिक क्रिटिसिज्म। जो बिबेटिक क्रिटिसिज्म है इसमें इमिटेशन है, या इमिटेशन और रिफ्लेक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ। बिबेटिक क्रिटिसिज्म इज इमिटेशन। तो इफ एनीवन आस्क यू कि बिबेटिक क्रिटिसिज्म है, तो बिबेटिक क्रिटिसिज्म में क्या इमिटेशन है, रिफ्लेक्शन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ। प्राग्मेटिक क्रिटिसिज्म में क्या है, it views the work as something which is constructed in order to achieve certain effects. Pragmatic criticism में क्या होता है, certain effect देखा जाता है of the audience, कि किताब का ऑडियंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। बिबेटिक क्रिटिसिज्म में किसी चीज की नकल की जाती है। अगर कभी कोई पूछता बिबेटिक क्रिटिसिज्म क्या है, इमिटेशन, इमिटेशन में नकल करना। प्राग्मेटिक क्रिटिसिज्म में क्या होता है कि जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट का ऑडियंस पे क्या असर है, इसको देखा जाता है। एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म में ये देखा जाता है कि आखिर टेक्स्ट का रिलेशन ऑथर से क्या, इट रिलेट्स अ लिटरेरी वर्क प्राइमरली इन रिलेशन टू इट्स ऑथर। इसमें ऑथर सेंटर होता है एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म में। ऑथर क्या एक्सप्रेस कर रहा, क्या बताना चाहता, वो चीज। ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म में किसी भी टेक्स्ट का बाहरी खूबसूरती या उसका ढांचा देखा जाता है। It deals with the work of literature as something which stands free from what often called an extrinsic relationship. Extrinsic का मतलब बाह्य स्ट्रक्चर उसका to the poet, तो उसको देखा जाता है। Environmental world. So these things you find कि ये चीजें रही है, types of criticism है, all these things you find. तो इतना आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, इसमें से कुछ रिलेटेड है। और हमने क्वेश्चन पेपर बना लिया है। कल क्लास जो है एक तो टेस्ट का भी करेंगे। टेस्ट का मैं आपको भेज दूंगा, आप किसी भी टाइम उसको, जो मैं सुबह भी भेज दूंगा, लेकिन आप किसी भी टाइम टेस्ट का जवाब मुझे दे दीजिएगा कल क्लास से पहले। और बाकी जो है कल शाम को हम क्लास पे आपको बात